Crack NEET and JEE in first attempt with India's most trusted platform, K-Square Career Institute. Download our app now. Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement is correct? Statement 1. In sphagnum, asexual reproduction takes place by green multicellular buds called gamete. Statement 2. The sporophyte of bryophyte is differentiated into foot, seta, capsule, and it is a free-living generation. Statement 3. Protonema is a green creeping branched and filamentous stage in mosses which develops directly from spore. Statement 4. Liverworts have an elaborate mechanism of सीड डिस्पर्सल. सो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड हमें देख के बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. लेट्स रीड दी स्टेटमेंट्स वन बाय वन. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि स्फैग्नम जो है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है बाय ग्रीन मल्टीसेलुलर बड्स कॉल्ड गैमे. तो यहाँ पे जो स्फेग्नम है इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज वाया फ्रैगमेंटेशन. गैमे जो है so asexual reproduction is via fragmentation. और ये जो मल्टीसेलुलर ग्रीन बड्स हैं गैमे, these are seen in Markensia, that is liverworts. Then second statement यहाँ पे कह रहा है कि the sporophyte of bryophyte is differentiated into foot, seta, capsule and it is a free living generation. So यहाँ पे it is differentiated into foot, seta and capsule, ये इतना पार्ट करेक्ट है. बट आगे लिखा है it is a free living generation. तो ये free living नहीं होता है. This is not free living. Then protonema is a green creeping branched and filamentous stage in mosses which develops directly from a spore. So this is correct. Fourth statement यहाँ पे दिया हुआ है liverworts have an elaborate mechanism of seed dispersal. तो liverworts में elaborate mechanism नहीं होता है. They do not have an elaborate mechanism of seed dispersal. So according to this, the correct answer of this question is option number 3. 3 जो है, this is the only correct statement that we have.